السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم شارٹ سٹوریز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہماری پہلی شارٹ سٹوری ہے دا 3 questions۔ The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, he could do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly, without help from others, the right time for every action. But then others said that there were something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council in order to decide the right time for doing something. It is necessary to look into the future, and only magicians can do that. The king therefore would have to go to magicians. Dear students, इसमें एक जगह का बादशाह होता है और उसके दिल में ख्याल आता है कि वो उसकी हुकूमत कभी नाकाम नहीं हो सकती, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता अगर उसे 3 चीज़ों का पता चल जाए। और वो 3 चीज़ें हैं कि सही काम करने के लिए सही वक्त कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, और कौन कौन से ज़रूरी काम उसे करने चाहिए। तो इन 3 सवालों का जवाब तलाश करने के लिए बादशाह क्या करता है कि अपने पैगाम रसा लोगों को भेजता है, पैगाम देके अपनी सुल्तनत में, और वो जाकर लोगों से वादा करते हैं कि हम आपको बहुत से इनामात देंगे अगर आप इन 3 सवालों का जवाब हमें दे दोगे। तो बहुत से अक्लमंद लोग बादशाह सलामत के पास आते हैं और उनके 3 सवालों का जवाब मुख्तलिफ तरीक़ों से देते हैं। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोग कहते हैं कि बादशाह सलामत एक टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, टाइम टेबल के मुताबिक हर काम आप कीजिए, इस तरह से आप हर काम सही वक्त पर कर सकेंगे। दूसरों ने कहा ये तो नामुमकिन है ये फैसला लेना एडवांस में कि कौन सा सही वक्त है सही काम के लिए। बादशाह सब कुछ देख रहा था जो कुछ भी लोग बता रहे थे, और लोग कह रहे थे अवॉइड फूलिश प्लेजर, कि बेवकूफ़ों जैसे खुशी में छलांगे नहीं लगाना, और हमेशा वही काम करना जो ज़रूरी हो उस वक्त। फिर भी कुछ लोग मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे थे कि आप अक्लमंद लोगों की एक काउंसिल बना दीजिए और वो आपको सही काम सही वक्त में करने के बारे में मशवरा देंगे। ऐसा इसलिए कह रहे थे वो लोग क्योंकि एक आदमी के लिए ये काम डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल था दूसरों की मदद के बगैर। बादशाह सलामत आप अकेले किसी काम को सही वक्त में करने की फैसला नहीं कर सकते हो, लिहाजा आपको काउंसिल रखनी चाहिए
ان لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے اور پھر جا کے کام کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کرنے کے لیے، ان چیزوں کو کسی فیصلے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی کسی کونسل کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لہٰذا صحیح کام کو صحیح وقت میں کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فیوچر کو دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں. لہٰذا یہ کام جو ہے یہ کوئی جادوگر ہی، کوئی میجیشین ہی کر سکتا ہے. لہٰذا بادشاہ سلامت آپ کو کسی جادوگر سے بات کرنی ہوگی، نجومی سے بات کرنی ہوگی جو آپ کو فیوچر کے بارے میں بتائے. پیارے بچوں، ہمارے مذہب کے مطابق ہمیں نجومی وجومی کے پاس نہیں جانا ہے. ہمیں کل کے بارے میں کوشش کرنی ہے، آنے والے بارے میں امید رکھنی ہے کہ وہ اچھا ہو. باقی ہمیں کسی نجومی پہ یہ بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ وہ کل بولے گا آپ کو یہ ملے گا، آپ کو دولت ملے گی، آپ کو یہ ملے گا. اس چیز کا ہمیں کلیئر کٹ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ایسی باتوں سے گریز کریں، اور نہ ہی ہم کسی کو ہاتھ دکھائیں تاکہ ہمارے ہاتھ کی کوئی لکیریں پڑے. حالانکہ علم نجوم بھی ایک علم ہے، لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان تو ہمیں منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو کرنے سے.